Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. First, we'll start with derivative and technical updates. On technical front, Nifty has recovered from its day low and closed above 18,400 level. Index for the current week is likely to trade between 18,000 to 18,500 level, and we are having a positive bias on the index. However, that on index 18,100 level where 50 SMA is seen, so Nifty may occur of buying from that level. In the bank Nifty, as long as bank Nifty is holding above 43,000 level, it indicates a positive sign. And the loss of momentum will only be if bank Nifty breaks its 43,000 level. And if bank Nifty breaks its 43,000 level, so bank Nifty may retest its 50 SMA level, which is at 41,800 level. In for the current week, in both the index, buy on decline strategy will be approached, and we believe that 18,000 level will be held. On the derivative front, Nifty future short covering with decrease in OI by minus 2.04%, which was the reduction by 2.55 lakh shares. PCR stayed at 1.01 level. The major addition was seen at 18,600 call option by 73.51 million shares and 18,700 call option by 72.72 million shares. On the put front, option 18,300 put option by 82.35 million shares and 18,000 put option by 66.15 million shares. Bank Nifty witnessed new long to the tune of 8.24% increase in OI, which was addition of 33.11 lakh shares. The PCR increased from 0.76 to 0.97 level, and the major additions were seen at 43,000 put by 23.61 million shares and 43,500 call by 27.13 million shares. The top three long build-ups were seen in Britannia, Muthoot Finance, and Escort, and the top three short build-ups were seen at TCS, Aarti Industries, and Wipro. And the FII's long-short ratio stands at 59.27%. Thank you so much, and handing to Devang sir. Thank you, Vikas. Good morning, all. So, a few fundamental news from my end. So, the Indian hotels have announced signing of its first hotel in Vrindavan, Uttar Pradesh. This is a management contract and is a greenfield project slated to open in 2026. Hotels will be occupied with 120 keys and is situated in Rukmani Vihar. With the addition of these hotels, IHCL will have 17 hotels across Taj Elocutions, Vivanta and Ginger brands across Uttar Pradesh, including 7 under development. Currently, we have a hold rating on the stock with a target price of rupees 347. The second news is on Chetak Technology. Chetak Technology Limited, a wholly owned subsidiary of Bajaj Auto, said it will double its market presence from 40 to 85 towns in next 3 months, and it will have 95 showrooms. Currently, it offers one product across 62 stores and has overall sold around 30,000 vehicles to date. Currently, Chetak Technology makes 6,000 vehicles a month, and once the company goes full stream, it will be able to produce 15 to 20,000 vehicles a month. Chetak Technology and its vendors said that it will invest 750 crores in the new plant. The company is also planning to start shipping its products internationally by the end of this fiscal. So this bodes well for Bajaj Auto. Indian steel mills have reportedly cut prices for auto grade offerings by 4,000 to 5,000 per ton because of higher available stocks and weakening of commodity cycles. In addition, Indian mills are looking to liquidate stocks due to slowdown in export markets and global recessionary pressures. And hence the mills have to focus on domestic markets.
So weak global sentiments and subdued domestic demand prompt us to maintain a neutral view on the sector. A few other news are NDTV, Adani Group subsidiary. They have bought 8.27% stake via open offer, and now their overall holding is 37.45%. In terms of Sterling and Wilson Renewable Energy, the promoters will sell around 3.69% uh, and 1.58% stake in the company, amounting to 1 crore shares at a floor price of 270 rupees per share. SDFC has raised 35 BPS of loan rates, home loan rates for customers with credit scores of over 800. So the new rate will be effective from December 20 and will start from 8.65% for such customers. DFM Food, the discovered price for the company's delisting process is 525 per share compared to its floor price of 263.8. In terms of IRB infrastructure development developers, the board will meet on Jan 4th to consider a stock split. In IRCTC, they had come out with an OFS, and LIC has increased its stake by around 2.28% to 7.28%. Uh, Bank of India will infuse around 57.92 crores in Star Union Daiichi Insurance. Just Dial, the promoters will sell around 16.686 lakhs, representing 2% of their overall shareholding via open market. This is to meet their minimum public shareholding. And the last news is on NBCC. The company has secured a project worth rupees 69.3 crores for construction of multi-storied quarter. That's it from my end. Over to you, Brijesh sir. Good morning, everyone. There are a few more news updates from my end. There's news in HDFC. HDFC, the retail RPLR has now increased their home loan rate by 35 basis point. So that from this would be effective from 20 December 2022. So that's a positive news for HDFC. Then the IPCA Laboratories, the company has acquired further 6.53% of the total paid up capital through share capital of MS Tropic Wellness Private Limited, and this is engaged in the business of manufacturing and marketing several SKU of Neutrocunes under the brand name of NeutroCharge for rupees 10.58 crores. With with the acquisition of this further 6.53 of the equity shares, the capital of the said Tropical Wellness Private Limited is now close to 58.88% of the paid up equity capital. Next on Sterling and Wilson, the promoters are willing to sell up to 5.27 percent stake in the company via OFS. The promoter Khurshid Darwala to sell 1.58% stake, and the base issue is 1.07%. Over subscription is 0.51%. There's another news on Vikas Lifecare. Vikas Lifecare, the material subsidiary in Genesis Gas Solution, awarded the technology advisory contract by Donier Group for their ongoing project in Mali. It's in Africa. Gujarat City Cement, the company says the key of the cement plant of the company located at Shindigram, that's Gujarat, has been stopped for a period of 8 to 10 days from today for maintenance work. However, the cement grinding and dispatch work will keep continuing. This update on sugar stock. The ethanol storage capacity at various locations in the country is being evaluated on ongoing basis. So OMCs have received an average of 10% of ethanol blending in petrol during the ethanol supply year 21-22. So ethanol storage capacity at various locations in the country is being augmented on ongoing basis to satisfy the requirement arising out of the increase in blending to 20%. It's a sources from the government. This air traffic data. So November, the domestic air passenger traffic this November 22 was up by 11.06% at 1.16 crore versus 1.05 year on year.
Indigo, the market share was at 55.7% versus 56.7% month on month. Even the SpiceJet, the market share was at 7.5% versus 7.3% month on month. So the November aviation data, domestic air passengers traffic in November overall up by 11.06% net net. IRB Infra, the board meeting on 4th Jan to consider a stock split. So that to be on watch list. Ramco Systems, there is a news. The board met on 22nd December to consider proposal for raising of funds by way of issue of equity shares and or warrants convertible into equity shares through preferential issue, private placement, or through any other permissible mode. Tips Industries, the company fixes 30 December as a record date for purpose of determining the entitlement of and the name of the equity shares who shall be eligible to participate in the buyback. DFM Foods, the delisting discovered price comes at 525 per share through reverse book building process, subject to acceptance by the promoter. The floor price was 263.80 per share. So Monday, the stock price was trading at 445 rupees. And lastly, this Narayan Vidyalaya, in its management stated that the company will continue with aggressive capex for the next 2 to 3 years, while PSP project has maintained EBITDA margin guidance at 12 to 12.5%. This is sourced from the 18. That's all from my end. I'll hand over to Hitendra for the Hindi updates. Thank you. Thank you, sir. Good morning, everyone. हिंदी में करने से स्टार्ट करेंगे IHC के साथ. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेंगे. स्टार्ट करेंगे इंडियन होटल्स के साथ. कंपनी ने अनाउंस किया कि उनकी जो फर्स्ट होटल है वृंदावन उत्तर प्रदेश में, ये मैनेजमेंट की ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जो कि ओपन होगी 2026 में. होटल के पास 120 कीज रहेगी और सिचुएटेड है ये रुक्मणी विहार में. इसके साथ IICL ने कहा कि वो 17 होटल्स और अक्रॉस ताज सिलेक्शन ब्रांड, विवांता और जिंजर ब्रांड जो उत्तर प्रदेश में ओपन करेंगे, उसमें से 7 अंडर डेवलपमेंट है करेंटली. सो करेंटली इसके ऊपर हमारी होल्ड रेटिंग है टारगेट प्राइस 347 के साथ. नेक्स्ट अपडेट है चेतक टेक्नोलॉजी जो कि बजाज की सब्सिडी है. उन्होंने कहा कि वो अपनी जो मार्केट प्रेजेंस है वो अभी करेंटली 40% है, उसको वो 40 टाउन्स में है, उसको करेंटली वो 85 टाउन्स में लेके जाएंगे अगले 3 मंथ्स में. और उसके बाद उनके पास टोटल 95 शोरूम्स से ओपन करने वाले हैं. करेंटली इनके पास एक ही प्रोडक्ट है जो कि 62 स्टोर्स में चल रहा है और ओवरऑल उन्होंने सोल्ड किया 30,000 व्हीकल जो कि बजाज की चेतक है उसके नाम से. और चेतक टेक्नोलॉजी ने ये भी कहा कि वो 6,000 व्हीकल्स करेंटली बना रहे हैं हर महीने. और वे से अगर वो फुल ऑल स्टीम्स में लेके जाएंगे, फुल फायरिंग पे लेके जाएंगे तो 15,000 से 20,000 व्हीकल्स तक वो लेके जा सकते हैं. और उन्होंने कहा कि उनके जो वेंडर पार्टनर्स और चेतक टेक्नोलॉजी मिलकर इन्वेस्ट करना चाहती है 750 करोड़ जो कि एक नया प्लांट भी सेटअप करने वाले हैं. सो कंपनी की प्लान है उनको वो स्टार्ट शिपिंग करेंगे इंटरनेशनली बाय ये फिस्कल ईयर के एंड के लिए. सेकेंडली इंडस्ट्रियल मील्स का भी एक रिपोर्ट आया. उन्होंने कहा कि उन्होंने जो प्राइस है वो कट की है ऑटो ग्रेड ऑफरिंग के लिए जो कि 4,000 से 5,000 टन के आसपास है. और बेसिकली जो कि स्टॉक एकदम अवेलेबिलिटी था और जो कमोडिटी साइकिल वीक होते की चलती है प्राइस कट देखा गया है. सो करेंटली बेनिफिशियल रहेगा ऑटो सेगमेंट के जो कि 9 to 10% रह रहा है स्टील कंजम्पशन के लिए. इंडियन मिल्स भी देख रही है कि जो उसमें से स्टॉक है वो लिक्विडेट करके और कैटर करना चाहिए कस्टमर जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जहाँ पे स्टूड आउट थोड़ा दिख रहा है एक्सपोर्ट मार्केट के चलते और ग्लोबल रिसेशनरी प्रेशर्स है इसकी वजह से. सो इसके चलते वीक डिमांड सेंटीमेंट रहेगा डोमेस्टिक में भी और हमें लगता है तो हमारा न्यूट्रल व्यू है सेक्टर के ऊपर. थोड़े जनरल अपडेट्स भी देखेंगे. एनडीटीवी के रिगार्डिंग न्यूज है. अडानी जो उनकी सब्सिडरी है उन्होंने बाई किया है 8.27% स्टेक वाया ओपन ऑफर. तो टोटल शेयर होल्डिंग इनकी 37% हो चुकी है. एसडब्ल्यूएस सोलार के जो प्रमोटर है शाहपुर जी बालन जी कंपनी ने उन्होंने सेल किया है 3.69% और 1.5% का स्टेक जो कि 1 करोड़ शेयर के आसपास है और अप्रोक्सीमेटली 270 पर शेयर के आसपास जो कि 20 और 21 दिसंबर को है.
HDFC ने अपनी जो होम लोन्स है जो कि रेपो लिंक पे उन्होंने 35 बेसिस पॉइंट से हाइक की है, जो कि कस्टमर्स को जिनकी 800 क्रेडिट्स के ऊपर है, और नई रेट्स है वो आज से लागू होगी जो कि 20 दिसंबर से है, और उनकी जो करंट अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 8.65% फॉर इन कस्टमर्स के लिए। DFM फूड्स ने भी कहा कि वो जो डीलिस्टिंग प्रोसेस है उसके लिए उन्होंने प्राइस डिस्कवरी किया जो कि 525 पीस है करंटली, फ्लोर प्राइस इसकी 263.8 है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर की बोर्ड है वो भी मीट करने वाली है 4 जैन को, बेसिकली स्टॉक स्प्लिट के लिए कंसिडरेशन में रहेगा। IRCTC के OFS में LIC ने भी पाके उन्होंने अपनी स्टेक है जो 7.28 से 5% से बढ़ा के 7.28% पे ले गई है। और बैंक ऑफ इंडिया ने भी इन्फ्यूज किया है, बैंक ऑफ इंडिया में इन्फ्यूज किया है 58 करोड़ रुपीस जो कि इनकी जॉइंट वेंचर है स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। जस्ट डायल की जो प्रमोटर है रिलायंस रिटेल वेंचर में वो सेल करने वाले 17 लाख शेयर जो कि 2% के आसपास है, और ओवरऑल शेयर होल्डिंग वो रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को टारगेट अचीव करने के लिए। NBCC ने भी एक ऑर्डर प्रोक्योर किया 70 करोड़ के आसपास का, बेसिकली कंस्ट्रक्शन रहेगा मल्टी स्टोरी क्वार्टर्स के लिए। नारायण हृदय ने कहा कि इनकी जो मैनेजमेंट के साथ मीट हुई थी उनको लगता है कंपनी अपने कंटिन्यूसली एग्रेसिवली ग्रो करेगी अपने केपेक्स को 2 से 3 साल के लिए, और PSU प्रोजेक्ट्स ने भी अपना EBITDA मेंटेन किया है जो कि मार्जिन गाइडेंस है 12 to 12.5% के लिए। पैंगो सिस्टम्स ने कहा कि उनका जो प्रपोजल है जो फंड रेजिंग के लिए वो बाय वे ऑफ इक्विटी इशू शेयर से कर सकते हैं, वारंट से कर सकते हैं, कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, या प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस के भी कर सकते हैं। टिप्स इंडस्ट्रीज ने फिक्स किया है रिकॉर्ड डेट जो कि 30 दिसंबर है, बेसिकली एंटर एनरोलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कि एलिजिबल रहेंगे बायबैक के लिए। PTC इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है भूटान ग्रुप ग्रीन पावर के साथ जो कि एक्सपोर्ट करेगा 600 मेगावाट पावर्स। एयर ट्रैफिक डेटा देखा गया नवंबर मंथ में देखा गया तो जो ओवरऑल एयर ट्रैफिक डेटा था वो 11% अप था जो कि प्रीवियस से 1.05 करोड़ से बढ़ के 1.16 हो गया है। इसमें अभी भी मार्केट लीडर इंडिगो है, पर इनकी जो मार्केट शेयर है वो 1% से ड्रॉप हुई है जो कि करंटली 56 से 55% हो गई है। स्पाइस जेट भी सिमिलर फ्लैट लाइंस पे है जो कि 7.5% है, वेस्टारा की 9.3 और एयर एशिया मार्केट की 7.6 है जो कि फ्लैट थी, और एयर इंडिया की मंथन में 9.1% है। शुगर स्टॉक्स पे ये न्यूज़ है कि जो इनकी एथेनॉल स्टोरेज कैपेसिटी है वेरियस लोकेशन में जो कंट्री में वो उसे ऑगमेंट करेंगे बेसिस पे, और OMCs को भी ये जो क्या 10% का एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के लिए रखा है जो टारगेट रहेगा 21-22 के लिए। सो इसी के लिए उन्होंने कहा कि जो वेरियस लोकेशंस पे उन्होंने जो ये ऑगमेंट बेसिस पे किया है तो उसके रिक्वायरमेंट्स के चलते ये ब्लेंडिंग परसेंट को 20% कर दिया गया है। गुजरात सिद्धि सीमेंट ने कहा है कि उनकी जो प्लांट है सिद्धिग्राम में वो स्टॉप करने वाले 8 to 10 डेज के लिए जो कि मेंटेनेंस वर्क के लिए है, बट हाउएवर उनकी जो सीमेंट ग्राइंडिंग और डिस्पैचेस है वो कंटिन्यू करेगी। विकास लाइफ का की जो मटेरियल सब्सिडी जेनेसिस गैस सॉल्यूशंस उन्हें एक अवार्ड मिला है टेक्निकल एडवाइजरी जो कि डॉर्नियर ग्रुप से मिला है, जो कि उनकी माली प्रोजेक्ट जो कि अफ्रीका में चल रही है। एप्का लैबोरेटरीज ने कहा कि उन्होंने एक्वायर किया 6.5% स्टेक जो कि उनकी पेड अप कैपिटल में से है, और ट्रॉफिक वेलनेस कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया है जो कि SKU सेल करती है न्यूट्रास्यूटिकल्स जो कि अंडर ब्रांडेड न्यूट्री चैरिटी, मतलब ये अमाउंट 10.5 करोड़ के आसपास का है। सो दिस इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द मॉर्निंग कॉल, यू मे नॉट डिस्कनेक्ट।